Hello students, Dr. Suruchi Satsangi here. Now the topic of today's lecture is balance of payment. Now the balance of payment means the balance of payment of a country is a systematic record of all the economic transactions. Means it's a balance of payment means it's a record of all the economic transactions between the residents of the reporting country and the residents of a foreign countries during a given period of time. It's a double entry system of record of all the economic transactions between the resident of a country and rest of the world carried out in a specific period of time. So we can say that a country's balance of payment, we are referring to the transactions of its citizens and the government of the resident country. Now the definition, the balance of payment of a country is a systematic record of all the economic transactions between the resident of a country and rest of the world, which we already discussed. It presents a specific record of all the receipts on the account of goods exported, services rendered, and the capital received by the residents and the payment made by them on the account of goods imported and services received from the capital transferred to the non-residents or foreigners, or we can say that foreign country. It is defined by the Reserve Bank of India, which is clearly stated that balance of payment is what? बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चा क्या होता है? इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जितने भी हमारी कंट्रीज़ के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हमारी कंट्री और दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बिटवीन बीच में, और ये साथ में क्या प्रेजेंट करता है? जितने भी हमारे रिसीट्स जितने भी हमने रिसीव्ड किए हैं, जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी हमें पैसा मिला, हमने जो भी सर्विसेज रेंडर की हैं, जो भी सर्विसेज दी हैं हमने, जितना भी हमने रेसिडेंट्स के द्वारा जितना भी कैपिटल रिसीव्ड किया, एक तो वो हमारा रिकॉर्ड रहता है। साथ में हमने जो भी सर्विसेज, अगर हमने कोई सर्विसेज ली हैं, कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की हैं या हमने कोई कैपिटल ट्रांसफ़र किया है, उन सब का जो भी हमने पेमेंट किया है उसका रिकॉर्ड। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है या इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स का, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ना फीचर्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। Systematic record of what? It's a systematic record of all the economic transactions. Transactions रिकॉर्ड कर रहे हैं किस चीज़ का? बिटवीन किन के बीच का? एक कंट्री और दूसरे बाकी सारी कंट्रीज के बीच में। तो इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Now, it's include all transactions, visible as well as invisible. सारे economic transactions, non-economic transactions, whatever it is, services even. तो visible हो या invisible हो, they include all record of all the transactions. It relates to a period of time. जनरली इट्स अ एनुअल स्टेटमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हर एनुअल स्टेटमेंट होती है। इट अडॉप्ट अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, क्योंकि डबल एंट्री है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीज़ें ही रिकॉर्ड करता है। ऑब्वियस है, डबल एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ टू साइड्स मीन्स क्रेडिट साइड एज वेल एज डेबिट साइड। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जितना भी आपके पास रिसीट्स आया है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो सब साइड, वो कौन सी साइड में जाता है? डेबिट साइड में जाता है। अब दो चीज़ें होती है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री इम्पोर्ट्स एंड इट्स एक्सपोर्ट्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ व्हाट? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये आपको पता होगा। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है? जब हम फॉरेन कंट्री से कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज उनकी ले रहे हैं, दैट मीन्स हमारी, अगर हम एग्जांपल लें इंडिया और यूएसए में, तो इंडियंस अगर यूएसए से कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, कोई भी कोई भी गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारा इम्पोर्ट होगा। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हम कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द एक्सपोर्ट। जब इंडिया के बाहर जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट है, और इंडिया के अंदर आ रहा है तो वो इम्पोर्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इट्स अ लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इट्स अ लार्जेस्ट कंपोनेंट, राइट। तो डेबिट साइड क्या क्या इंक्लूड होता है? डेबिट में इम्पोर्ट्स, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ओके। क्रेडिट साइड्स कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं? एक्सपोर्ट्स,
foreign spending in the domestic economy, foreign investment in a domestic economy. Okay, वन मोर थिंग। अब बात आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जब भी हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो फेवरेबल होगा। अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से दैट मीन्स अनफेवरेबल है। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे ऑब्वियसली वी अर्न मोर, राइट? तो हमारा फेवरेबल इनकम होगी, राइट? फेवरेबल होगा। और अगर हम ज़्यादा परचेज करेंगे तो हमारा वो अनफेवरेबल होगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारे ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसा जो नाम बता रहे हैं पेमेंट से रिलेटेड है, दैट मीन्स इट इंक्लूड ऑल द ट्रांजैक्शंस। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो जितने भी ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ऑल द ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। Now the difference between balance of payment and balance of trade. Balance of payment is a broad term as comparison to the balance of trade is a narrow term. Now the balance of payment includes all the transactions, either it is visible, invisible, or the capital transfers, and same as balance of trade is a only record visible items. It always balances itself, right? And balance of trade can be a favorable or unfavorable. How to calculate balance of payment? So balance of payment को calculate करने के लिए you can write balance of payments is equals to current account, capital account plus or either minus balancing items. Balancing items means कोई errors, कोई omissions है, that means okay. Balance of trade how can we calculate? By net earning on export minus net payment for import. जितना भी आपने export and import में जो difference होता है that is the balance of trade. Now, before, in balance of payment, following are the main factors which affect the balance of payment. Conditions of the foreign lenders. Foreign lenders की conditions क्या हैं? These are that factors which affect the balance of payment. Economic policy of government and all other factors of the balance of trade. ऐसी same main factors होते हैं जो balance of trade को affect करते हैं, like cost of production, availability of the raw material, exchange rate, prices of goods manufactured at home. Okay. Now, what are the importance of balance of payments? Balance of payments की importance क्या है? Balance of payments record all the transactions that create demand for and supply of the currency. तो balance of payments क्या करता है? सारे transactions को record करता है, वो transactions जो demand को create कर रहे हैं plus supply कर रहे हैं currency को. Judge economic and financial status of the country in a short term period. Balance of payment may confirm trend in economic, international trade and exchange rate of the currency. This may also indicate change or reversal in the trend. Now, balance of payment may also indicate policy shift of the monetary authority, that is RBI of the country. Balance of payment may confirm trend in economic, international trade and exchange rate of the currency. This may also indicate change or reversal in the trade. Now, what is the general rule in balance of payment accounting? If the transactions earn foreign currency for the nation, it is a credit and it is recorded in the plus side. Now, please focus on this point. Transactions earn जितने भी foreign currency earning है nation के लिए वो सारी हमारी plus items में जाएगी and credit side जाएगी. अगर कोई भी transaction involve spending on the foreign currency, अगर spend किया है, खर्चा किया है, तो ये सारा debit side जाएगा और negative item होंगे. नाउ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट्स हैं? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट एंड लास्ट होता है एरर एंड ओमिशन. करेंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? Balance of payment on current account is a statement of actual receipts and payment in short period. जो भी हमारी actual receipts होती हैं, payments होती हैं short period of time की, वो current account में आते हैं. It include the value of export and import of both. ये export और import दोनों side की visible हो या invisible goods का include करता है. There can be either surplus or deficit in the current account. either surplus होगा या deficit होगा. The current account include current account और क्या क्या चीज़ें include करता है? Export and import of the services, interest, profits,
dividends, unilateral receipts, payments from or to abroad. Balance of payment on a current account also refer to the inclusion of the three balances, like merchandise balance, services balance, and unilateral transfer balance. This is all about the current account balance. Now the types of balance कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रेड बैलेंस होता है, इनकम बैलेंस होता है और नेट यूनिलेटरल बैलेंस होता है, ट्रांसफर। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। ट्रेड बैलेंस में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज आएंगी। इनकम बैलेंस में हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आएगा या नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आएगा। नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर में गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी माइनस गिफ्ट्स टू फॉरेन करेंसी। ठीक है। Now the capital account balance क्या होती है? Capital account record all international transactions that involve the resident of a country concerned changing either his assets with or his liability to a resident of another country. Transactions Transactions in the capital account reflect a change in the stock, either assets or liability. तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड कंसर्न कर रहे हैं either हमारे changing his assets with his with his liability to the residents of the another country. Transactions in the capital account reflect a change in the stock, either assets or liability. It is a difference between the receipts and the payment on the account of capital account. It refers to all the financial transactions. The capital account also involved the inflow and outflow of relating to investment, short-term borrowings, lendings, and medium-term to short-term borrowings and lending. Capital account, there can be a surplus or deficit in capital account. It also includes private foreign loan flow, movement in banking capital, official capital transactions, reserves, gold movements, etc. It also classified into the two categories, that is the direct foreign investment or portfolio investment. Now reserve account, three accounts are included in the reserve account: IMF, SDR, रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड आर कलेक्टिव कॉल्ड द रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट में क्या क्या आता है? IMF आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व्स एंड मॉनेटरीज गोल्ड, ये सारे के सारे हमारे रिजर्व अकाउंट में आते हैं। IMF अकाउंट्स कंटेन परचेज एंड रीपरचेज फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF हमारा क्या करता है? जितने भी हमारे परचेजेस हैं, रीपरचेजेस हैं, वो सारे इंक्लूड करता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है रिजर्व एसेट्स क्रिएटेड बाय IMF, एक रिजर्व एसेट्स होता है जो स्पेशली क्रिएट किया जाता है एंड एलोकेटेड फ्रॉम द टाइम टू मेंबर्स कंट्री। It can be used to settle international payments between monetary authorities of two different countries. Now the errors and omissions, entries under this head जितनी भी entries हम करते हैं वो mainly leads या lags in reporting of transactions, and it is of the balancing entry and is needed to offset the overstated or understated outflows. Now this is the receipts and payments. Trade balance account, you can see that. Current account balance, you can see that. And the capital balance account, you can see that. Now what are the balance of payment हमेशा equal रहे, that is not the right thing. डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है। तो क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है? दैट इज अ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, rapid increase in population, structural changes, natural calamities, international capital movement. These all are the causes of the disequilibrium in the balance of payment. Thank you.